यही सोचा कि लेट्स क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज एंड तब मैंने दूसरा फ्रेंचाइजी भी लिया एंड आई सॉ जब लास्ट ईयर हमने पहला इंडिया के लिए क्राउन जीता विच वाज साई प्रसन्ना वन द क्राउन एंड शी क्रिएटेड अ हिस्ट्री बाय विनिंग द मेन क्राउन. That's when I realized that this is the best niche I could ever get, and I think nothing better than having a Mrs. category जिनके पास बच्चे हैं, एक अपना लाइफ है, एक प्रोफेशन है और तभी भी आप बाहर आकर अपना ड्रीम पूरा कर रहे हो. So that was the only reason I think I took the franchisee. Oh wow, I mean ये I think that vision, mission और लोगों के सपने पूरे करना, this is what आपने ठान लिया है. Definitely. And I'm sure this is definitely going to bring wonders in India, right? I mean वो question तो मुझे जहन में पहले सोचा था मैंने कि मैं आपको पूछूंगी how it's going to be different, but I think आपने बयां कर दिया अपने प्यारे अल्फाजों में कि it's the emotion, guys. So yes, everybody has a dream, you know, to be something, but due to family restrictions, बच्चे होने के बाद में नहीं कर पाते काफी लोग, but Audrey is the one who is taking that initiative to fulfill all the married women's dream. Thank you. So well now, ladies and gentlemen, let's invite a winner. Absolutely right. So yes, without further ado, ladies and gentlemen, it's time where I welcome the super gorgeous, the stunning Mrs. All together, मतलब एक पूरा transformation. What you see me today is actually not the way I am in my real life. I am struggling with patience, research work, documentation and all. So, but ये जो glamour वाला side है, ये भी अच्छा है because I have always thought कि beauty हमेशा एक purpose के साथ होना चाहिए. And if अगर मैं कुछ कर सकती हूँ through my profession with the help of this beauty pageants, I would really like to help women and child empowerment. So इसी वजह से I got in touch with Audrey ma'am और ये जो journey शुरू हुई और ये moment जो आपने मुझे बोला, like I was on my knees when I won the crown. And I really didn't know how I could make it. It was because of a constant support, constant saying कि कुछ करना है, साई you have to be 100%, always, always, always. So that is how it all happened. Wow. So एक message that you like to give to the other women. बहुत सारी you know like Indian women है अभी भी बहुत सारी चीजों की वजह से वो अपने ड्रीम फॉलो नहीं कर पाती. इनफैक्ट ड्रीम देखना ही नहीं चाहती क्योंकि घर के कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं, इन लॉज होते, तो कोई एक मैसेज जो आप देना चाहेंगी उन्हें? सिर्फ इंडिया के लिए कुछ करना है ऐसा जरूरी नहीं है. अगर हम सिर्फ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ करते हैं, we take a step ahead, जो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है दूसरों से, वो sufficient है. It is not always that you have to win a beauty pageant, you have to win a hockey medal or a cricket medal, या फिर आपको IAS ही बनना है, टॉप करना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. आप कुछ भी करें, थोड़ा डेडिकेटेडली करें और कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा सोसाइटी थोड़ा बहुत डेवलप हो जाए. नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है उसके लिए हम कुछ डेवलप कर जाएं. That is enough. वो itself is a big thing, I think. Wow, I mean that's marvelous. That's so good. So now, ladies and gentlemen, it's time where we welcome the things that you learn
the grace that you learn through the pageantry, and with the way you feel about yourself once you've passed through any competition, or if you've won any crown, you actually feel like you've done something. There's a contribution, to the society, to the most, to the positive, divine, feminine energy. I think all of that, it's all stuck in the head. So I'm never out of it. I'm never coming back. It's always there. Wow, super. सबसे पहले तो congratulations. I mean, you are all over. Like for your marriage, of course. I mean, you were looking so fabulous, and so was your husband. So I want to know. मैं ये भी जानना चाहूँगी कि what is that? Now that you're married, right? And this entire show is about being the missus. Right. So what is your take on this? Take on match? No, on like being married and being the missus, for your partner. So I think with time, as I grew up, the concept of marriage, the constitution of marriage, it kept changing. It kept going to and fro. There were times that I was like, I will never get married. I never want to get married. There were times where like, oh my God, I really want to get married. There were times, we all face that as women, right? Yeah. But I think after getting married today, I can proudly say that I'm not an advocate of women are best or men are best. No, I think with my marriage with Apurva, it has made me realize that everything, we both complete each other. Men and women complete each other. It cannot be competitive. It cannot be, there's no competition. Things that what a woman can do, a man might not be able to do, and things and what a man can do, a woman might not be able to do. And let's accept that. There is no harm in accepting that, we do need men and men do need women. Wow. It is just as clear as that, and that is the concept of marriage. I think the combination, combining the two energies, I think you can create something that you are not even ready for it. Right? Wow, just like a puzzle, right? And creating the whole beautiful picture out of it, like companionship. That's very beautiful of you and your partner. So yes, one thing, Divya, there are a lot of women, who are not, after marriage, they think that compromise is the only thing and they give up on their dreams. So one advice that you would like to give them, and first of all, also one thing, because it's a competitive industry, right? So any message that you feel? I think everything is a competition in today's world, and I don't feel like marriage is the one that blocks your, pathway to achieve something, or I think you have to break through right from the beginning. When you're born, there have been challenges, there have been competitions right from at a very young age. So getting into Mrs. India or Miss India or Mrs. India, however it is, whenever you feel the time is right, it's never too late. And I think the blockages are only with yourself, because once a woman decides to do something, she will do it. Wow. She will do it. So I think you just need to power that up. You don't need to be scared. And once you're true to your passion, true to your approach about what you exactly want in life, I don't think there's any energy or force that can stop a woman. Wow, I mean that was really beautiful piece of advice. Thank you so much. And अभी मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगी, आप सभी के जो भी questions है, we have the gorgeous ladies. मैरिड वुमेन्स को, और मैम ने जैसे कहा कि जितनी भी महिलाएं हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो सोचती है कि शादी के बाद करियर खत्म हो जाता है. Correct. आप बताइए आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आप मतलब आपने ये इसकी शुरुआत की सीजन 1? Wow. So my best friend Divya just got married. और मैं married, I am not married, मेरी शादी नहीं हुई है, but मैं एक pageant को represent करती हूँ जहाँ पर married women are representing themselves beautifully. तो अब reason ये था कि जब मैंने pageant किया था तो I was obviously जैसे दिव्या ने कहा कि once a pageant girl will always be a pageant girl. But जब मैंने अपना training institute शुरू किया था, तब मैं बहुत मैरिड विमेन से मिली जो ट्रेनिंग के लिए आते थे, एंड मैंने देखा कि उनकी स्टोरीज जब मैं सुनती थी, हाउ दे यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर ड्रीम्स, जब वो मुझे शेयर करते थे अपनी चीज़ें, तब मुझे ऐसे लगा कि व्हाई नॉट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सपने तो आई थिंक सभी देख सकते हैं,
उनको एक पाथवे दिखाने के लिए, उनको एक रास्ता दिखाने के लिए कोई तो होना चाहिए टू गाइड देम थ्रू दैट लाइट। तो इसीलिए मैंने ये फ्रेंचाइजी लिया और इसीलिए मैंने ये सोचा कि एक पैजेंट ऐसा क्रिएट करो जहाँ पर विमेन कैन यूज दैट प्लेटफॉर्म। जैसे साई इज अ डॉक्टर, बट साई ने जैसे कहा कि मैं एक प्लेटफॉर्म यूज करना चाहती हूँ टू प्रमोट माई प्रोफेशन थ्रू अ क्राउन। तो anyone, I think anyone can be a pageant queen. You just need someone to guide. तो I just wanted to be that guide और मुझे यही करना था, एक pageant launch करना था, and today we are doing that. We are launching the season 1 and I'm very excited. Right. दिव्या, आपसे जानना चाहूँगा, ऑड्रे आपकी दोस्त है और शादी से पहले आई एम श्योर इसके बारे में बताया होगा ऑड्रे ने आपको, क्या रिएक्शन था और एज अ वुमन मैरिज के बाद क्या चेंजेस देखती है आपको? शादी से पहले ही नहीं, आई थिंक इसका ये सपना पिछले कई सालों से था जो हम डिस्कस करते थे दैट यू नो वी हैव टू डू समथिंग लाइक दिस एंड यू नो बिकॉज हम दोनों ने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, यू नो गोइंग थ्रू दैट जर्नी एंड द कॉन्फिडेंस दैट वी गॉट, द थिंग्स दैट वी लर्न, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमें ऐसा लगा कि अभी जो हमारी नॉलेज है वो आगे पास होनी चाहिए। वी शुड डू दैट फॉर पीपल, फॉर मैरिड वुमेन स्पेशली, बिकॉज उस टाइम पे उनको कोई गाइड करने वाला मिला नहीं था। एंड आई फील आफ्टर मैरिज कुछ बदला नहीं है। आई फील ऑनेस्टली देयर इज नथिंग मोर, इन फैक्ट थिंग्स हैव ओनली बीन एम्प्लीफाइड। मुझे जो फायर मेरे अंदर है वो और पुश करने के लिए देयर इज अ स्ट्रांग मसल मैन स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी हु इज पुशिंग मी थ्रू एवरीथिंग। और जितनी ज़्यादा मैं शेरनी थी तो he is you know like giving me full throttle support. So I think I've become more wiser, more confident and more calm. अपूर्वा कितना सपोर्ट करते हैं? अपूर्वा को तो मैं बोलूँगी अगर पहाड़ तोड़ के लेके आना, he'll do that also. He will support in anything. But because that's only because he believes in me that you know I'll never do anything just say मुझे परेशानी होगी या मैं उदास रहूँगी. I think his priority in his life for me towards me is only my happiness. उसको जब तक मैं हंसते हुए दिखूंगी सब ठीक है, जब मैं हंसते हुए नहीं दिखूंगी then it's a problem for everybody around. So cute. Also ऑड्रे, आपसे जानना चाहूँगा जो नया सीजन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, उसके बारे में अगर कुछ बताया आप हमारे ऑडियंस को। परफेक्ट। तो हमारा ये जो सीजन 1 है ऑफ नेशनल पैजेंट, तो हमारा जो ये सीजन 1 है जो ऑफ नेशनल पैजेंट, ये होगा आफ्टर मॉनसून्स। एंड क्योंकि हमारा इंटरनेशनल पैजेंट होता है विंटर्स में, तो इसलिए आफ्टर मॉनसून हमारा ये नेशनल पैजेंट होगा वेयर वी विल हैव ऑडिशंस फॉर विमेन। रजिस्ट्रेशंस अभी यहाँ से शुरू हो गई, सो यहाँ से फ्रॉम टुडे इटसेल्फ वी हैव द रजिस्ट्रेशन जो ऑन होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद द लेडीज विल रजिस्टर, इनका ऑडिशन होगा, out of which shortlisted ladies will go to the semi-finals and then be the finals. And finals में हमारा obviously there'll be a proper stage, उनका 1 महीने का training होगा, and then training process के बाद they'll be taken through a training process with the best people from the fashion industry, and after the training जो 2 winners होंगे on the finale, they will be representing, one will be representing at Mrs. Grand International and the other will be representing at Supranational World internationally. Right. Also इंडिया में कितनी जगह पे ऑडिशन होने वाले हैं और कैसे, मतलब क्या-क्या कैटेगरीज होगी या फिर क्या-क्या क्राइटेरिया होगा जब आप वुमेन्स को मतलब सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर? Perfect. So obviously Mumbai being the city that is prime, so Mumbai में ऑडिशन होगा, प्लस मैं गोवा से हूँ तो गोवा में तो ऑडिशन होगा ही। And apart from that, I have seen a lot of women जो Delhi and you know from north we have a lot of women जिनके बहुत सारे सपने, अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखो, so we have a lot of mom bloggers जो दिल्ली से है, नॉर्थ ईस्ट से है, we have Bangalore that we are targeting, so these are the major places that we are targeting. Auditions तो obviously pan India होगा. After that the criteria to be selected, we have absolutely no criteria. The woman should be above 18, married legally, and it is okay if you are a MS category, which is a separated category, or a divorce category, so that comes under the MS category. So you can be a Miss category as well, not MISS but MS category. And we definitely have no height bar, and you can be the way you are, because that the only thing about the training process married women के लिए ये है कि हम उनको एक ट्रेनिंग प्रोसेस से ले जाते हैं। तो हमारा आइडिया ही ये है कि हम आपको ग्रूम करें, हम आपको इंस्पायर करें। हमारे जो बेस्ट मेंटोर्स हैं ये इंडस्ट्री के, दे विल कम फॉरवर्ड, दे विल ट्रेन यू फॉर द प्रोसेस, दे विल मेक यू अ क्वीन, और तब आप रिप्रेजेंट करोगे। सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग स्पेसिफिक, बट येस
यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, और बाकी का आप हम पे छोड़िए क्योंकि हम आपको बेस्ट ट्रेनिंग देंगे. Training is the best. एग्जैक्टली, ट्रेनिंग इज द बेस्ट, क्योंकि आई थिंक ट्रेनिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट. हमने भी, जब मैंने मिस इंडिया किया था तो मैंने 7 साल की ट्रेनिंग की थी, एंड पैजेंट में आना और ट्रेनिंग करके आना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाट वी गोना टेक यू थ्रू. दिव्या दिखेगी during grooming session and all. Of course. You really think Divya दिखेगी? Of course Divya दिखेगी. She will definitely be there. Always. Audrey, since अभी हमने बात की कि दिव्या की शादी बहुत चर्चे में है. You were the one who organized her wedding, besides being a friend also. What was the idea behind ये successful marriage? कैसे planning की थी, क्या था उसके पीछे? So Divya had a very beautiful story. जो जब दिव्या ने मुझे बताया कि ऑड्री मुझे शादी ऐसे एक पर्टिकुलर वे में करना है, दिव्या का विजन ये था कि नंबर 1 कि वो अप्पू से जैसे मिली, जहाँ मिली, उसे वो पोर्ट्रे करना था. सो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे जगह पे हुए हैं जहाँ पर दिव्या और अप्पू पहले बार मिले थे, एंड जहाँ से इनका लव स्टोरी शुरू हुआ था. सो वहाँ पर एक इवेंट हुआ था. फिर दिव्या इज वेरी क्लोज टू हर हाउस, टू हर फैमिली, टू द एंटायर सराउंडिंग विद फ्रेंड्स. अगर आप देखोगे दिव्या के friendship with people is very beautiful. So hence most of the rituals were again done at home. And then after that दिव्या ने बोला था फॉरेस्ट थीम करना था. अब मिला नहीं फॉरेस्ट. फॉरेस्ट हम नहीं लिए, हम फॉरेस्ट नहीं जा नहीं पाए. तो हमने फॉरेस्ट दिव्या के घर पे ले आए, तो हमने पूरे पेड़ लगाए. नहीं, all the animals, my friends, they were all there. We were all there. जंगल के जो जानवर है वो सारे मौजूद थे, बस पेड़ पौधों की कमी थी, बाकी सब सही था. So I think I was sticking to the forest team anyway. Yeah. And Divya was very creative. I really like one thing about Divya is that दिव्या बहुत easy to go bride थी. तो मैंने बहुत सारे brides देखे, क्योंकि last year I think बहुत शादी season था, तो बहुत सारे लोगों की शादी हुई थी, and I've seen brides being so panicking about things कि नहीं ऐसे कपड़े पहनने, ये करना है, वो करना है, मेरा ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं. दिव्या was so smooth कि दिव्या को अगर हम कुछ बोलते भी थे तो दिव्या is like हाँ ठीक है, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, let's go with it. So she was so smooth about the entire process, and I think that is something that also made her have a successful wedding. And I think we all as people and friends bonded so well. So वो हमने एक बहुत beautiful relation सबने एक दूसरे के साथ वहाँ पे create किया. So we had beautiful memories. It was a very 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 nice wedding. Right. Side आपसे एक सवाल है. What inspired you the most to get into this pageant? And आप क्या कहना चाहेंगी दूसरी लड़कियों के लिए जो who wants to get into this pageant and अपने आप को इस मुकाम पे लाना चाहते हैं? Thank you for the question. Inspiration is obviously the surrounding women whom I see in day-to-day life. Every woman has a different story. But मेरे लिए fitness बहुत मायने रखता है. And I want कि लोग ये अपने lifestyle में ले आएं to be fit. क्योंकि वैसे तो don't take it otherwise, मर तो हम हर दिन सकते हैं, कोई किसी कहीं पे भी, पर थोड़ा सा fit हो लें. एटलीस्ट इंडिया जो डायबिटीज के कैपिटल जाने अभी वी नो दैट इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एटलीस्ट वो हट जाए, वो टैग हट जाए हमसे. और ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी की जो अभी चल रही है, मतलब लाइक इंडिया इज बिकमिंग द कार्डियोवास्कुलर डिजीज सेंटर, राइट. थोड़ा बहुत अगर हम मेरे तरफ से आई हेल्प द वुमेन टू रियलाइज दैट दे कैन बी फिट, they can change their lifestyle. घर में the woman is quite responsible for taking care of the child, the entire family. So अगर थोड़े बहुत changes जो हम अपने lifestyle में ले आते हैं और उससे मतलब health conditions सही हो जाती है, better हो जाती है. So that was the first reason I was into fitness, and then I thought that I also wanted to promote child education. And Odisha is not a very literate state. Past 7 years it is growing, so I just wanted to promote education also, and especially women education. I help my own home मीन्स जो हमारे होम मेकर हैं वो एक उनकी बेटी को मैं पढ़ाती हूँ. तो मेरी यही कोशिश है कि थोड़ा बहुत एफर्ट्स अगर इस पेजेंट के थ्रू से लोग मुझे जानते हैं और वही एफर्ट्स मैं अपने स्टेट में, अपने कंट्री में ले आऊँ, जिससे कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाए. So that was what it was all for. Thank you. Thank you so much.